Assalamu alaikum ji. My name is Ghulam Technology Wala. Today the topic is a TED Talk है. And the science of motivation review of Dan Pink TED Talk. In this TED Talk, Dan Pink expresses ideas and motivations. The second name is the puzzle of motivations that explore one of the most fascinating aspects of human behavior. What truly drives us to do better work? For decades, organizations have relied on reward and punishment, the classic carrot and stick method to motivate people. But Dan Pink presents a powerful argument that this old system does not work anymore, especially for modern creativity and cognitive tasks. He starts by explaining that scientific studies show a mismatch between what science knows and what business does. While business still believe that the higher rewards leads to better performance, research consistently show the opposite, that bigger rewards often lead to worse results when the work requires creativity, problem solving, and innovation. Dan introduced a new framework for motivation, but not three, but on three key elements like autonomy, mystery, and purpose. In the first one, autonomy, he says that people wants to have control over their work. Pink argue that give employees freedom to choose what they work on, when and how increase engagement and satisfaction. He gives example of companies like Alterations, which gives employees FedEx days to work on anything they want, lead to surprise innovation. The second one is the mystery. He says that the desire to get better at something that matters. When people are motivated to improve their skill, they experience deep satisfaction and flow. Dan emphasized that mystery is a mindset, not a goal. Not a goal. It's the journey that continues in definition. Purpose, the main and the last one is the purpose. Finally, the people need to feel that what they do makes a difference. When the work connect to a large cause, motivation skyrocket. Pink note the more organization today are realizing that profit alone it's not enough to inspire great work. People crave meaning and contribution. Dan Pink's talk is not just a presentation, it's a wake-up call to rethink how we lead, manage, design workplace. His storytelling, humor, and clarity make complex psychological research simple and inspiring. By the end of the talk, you are left rethinking how motivations reads work. It is not about money, pressures, and about giving people freedom, growth, and purpose. Key, the main key takeaways in this session is to motivate people effectively in 21st century. We must move from strict motivation, rewards mean punishment, to strict motivation, purpose, and mystery and autonomy. This talk is a much must watch to for leaders, teachers, and anyone who wants to understand human behavior at a deep level.
टिक टॉक में टेड टॉक में मोटिवेशन ऑफ साइंस का जिक्र किया गया है। ये एक नहायत ही खूबसूरत अनवान है और इस पर डैन बैंक ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना इजहार ख्याल किया है और इस पर हैरत अंगेज रोशनी डाली है कि मोटिवेशन इंसान की जो मुहरकात हैं, द पजल ऑफ मोटिवेशन, जो डैनबर्ग की डेड टॉक में बरसों से हम समझते आए हैं कि लोगों को इनाम या सज़ा देने का बेहतर कारकर्दगी दिखाई जा सकती है, यानी गाजर और लाठी वाला तरीका। लेकिन डैन बैंक पे साबित करते हैं कि आज के दौर में ये तरीका नाकाम हो चुका है, ख़ास तौर पर उन कामों में जिनमें तख्लीकी सोच और मसला हल करने की सलाहियत कम है। वो कहते हैं कि साइंस और बिजनेस के दरमियान एक तज़ाद मौजूद है। साइंस कहती है कि ज़्यादा इनाम हमेशा बेहतर कारकर्दगी नहीं देता, बल्कि अक्सर नतीजा उल्टा होता है, जबकि ज़हानत या तख्लीकी सलाहियत मांगना है कि तब ज़्यादा पैसा देने से प्रेशर बढ़ता है और कारकर्दगी गिर जाती है। डैन बिंग 3 बुनियादी अनासर पेश करते हैं जो हकीकी मोटिवेशन पैदा करते हैं, जिसमें पहला मकसद है, महारत है और खुद मुख्तारी है। हम खुद मुख्तारी से शुरू करते हैं कि इंसान चाहता है कि उसे अपने काम पर कंट्रोल हासिल हो। जब लोगों को आज़ादी दी जाती है कि वो कब, कैसे और किस तरह काम करें, तो वो ज़्यादा दिलचस्पी, ज़्यादा ज़िम्मेदारी से काम करते हैं। डैन मिसाल देते हैं कि कुछ कंपनियां अपने मुलाजमीन को एक दिन के लिए आज़ाद छोड़ देती हैं ताकि वो अपनी पसंद का काम करें और उससे हैरत अंगेज़ आइडिया सामने आते हैं। नंबर 2 पर वो महारत के मुतल्लिक़ बयान करते हैं कि इंसान के अंदर फितरी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी काबिलियत बेहतर बने। जब वो सीखने और बेहतर होने के सफ़र पर होता है तो उसे अंदरूनी खुशी, तस्कीन मिलती है। डैन कहते हैं कि महारत एक ज़हनियत है, एक ऐसा सफ़र जो कभी ख़त्म नहीं होता। और अब अगर इसके मकसद की तरफ जाएं तो वो इसमें बयान करते हैं कि जब इंसान को एहसास होता है कि उसका काम किसी बड़े मकसद से जुड़ा हुआ है तो उसकी मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाती है। पैसा वक्ती हौसला देता है, मगर मायने और मकसद देर पा जज्बा पैदा करते हैं। डैन बैंक की गुफ्तगू नहायत ही मुतासर की है, आलमी और हकीकत पर मबनी है। वो हल्के फुल्के अंदाज में गहरे ख्यालात बयान करते हैं और सामीन को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि असल मोटिवेशन कहाँ से आती है। अगर हम इसके नतीजे की तरफ जाएं कि डैन अगर हम चाहते हैं कि लोग बेहतरी कारकर्दगी दिखाएं तो हमें उन्हें आज़ादी, तरक्की का मौका और मकसद देना होगा। असल मोटिवेशन पैसों या दबाव से नहीं बल्कि मकसद, सीखने और आज़ादी से जन्म लेती है। इसमें डैन ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने ख़यालात का इजहार किया है और हमें अपनी सोचों को तब्दील करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। क्या आने वाले वक्त में हम वाकई उस तरफ जा रहे हैं? क्या वाकई हमें उन चीज़ों के मुतल्लिक सोचना चाहिए? ये सारी चीज़ें इंसान की तरक्की और उसकी खुद मुख्तारी और उसकी ज़हनी सलाहियतों को आगे बढ़ाने का एक मौका है। ये टेड टॉक एक मुतासरकुन गुफ्तगू के साथ साथ एक मोटिवेशन भी है, जिसमें इंसान अगर अमल करे तो मैं भी इसमें एक नए पहलू खुल सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना टाइम दिया और मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।